हेलो बैंकर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स। ओके, सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए एंड IRDI and their role and responsibilities in with reference to Indian financial system. Okay, so unit number 27, which is all about financial regulators, as you can see the course content. So the basic introduction, then we have role of financial sector regulators, then we have four regulators, so which are given under this particular one, right? So बहुत basic आपका again है, ठीक है? और you can expect 1 marks or half marks question based on this particular unit. Most of the time it is about the role and responsibilities of the regulators. Okay, so let's start with this one. So everyone knows about the financial regulators. So we have like four major regulators. Apart from this, we have IFSCA, which is a newly created entity, which is a kind of we can say unified regulators to assist the इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस और कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट्स आपके हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है? सो फॉर दैट वन वी हैव अ डेडिकेटेड यूनिट, उसमें हम उसके ऊपर बात करें, ठीक है? सो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स दे जनरली हेल्प इन दैट पर्टिकुलर एरिया, जो भी सबका एक डेडिकेटेड एरिया है। लाइक फॉर आरबीआई इट इज बैंकिंग सिस्टम, फॉर इंश्योरेंस वी हैव इरडा। तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस आपका डिजाइन करना, प्रोसेस सेट करना एंड साथ ही साथ इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दैट इज द की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सब में से बात करते हैं आरबीआई, जिसकी वजह बहुत सारे फंक्शंस आपके हैं, तो उनके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स प्ले अ विटल रोल इन शेपिंग एंड maintaining the stability and integrity of economy's financial system. In a complex economic environment, these regulatory bodies ensure that financial institutions operate transparently, efficiently, and in the best interest of the consumers. Okay, so like these are some major roles which are generally played by the regulators. First one is ensure stability in the financial system. Then we have protecting consumers' interest. Then we have promoting competitions. Then we have ensuring integrity and transparency in the system, and regulation intermediaries, regulating intermediaries, and supporting economic policies. So these are some key role and responsibilities जो कहीं ना कहीं जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स आपके हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं आपका प्ले की जाती है, ठीक है? सो सेम थिंग, जैसे आपके बुक के अंदर से भी मैं कुछ कंटेंट लिया हूँ। जनरेट, मेंटेन एंड प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट of the public in the financial system, protect investors' interest by educate timely disclosure by the institutions and across the access to information by the investors, ensure the financial market are both fair and efficient, ensure that market participants measures up to the rule of the marketplaces, ensure that financial instruments are available in the market are fair to the interest of the market participants, and do not give any particular segment unfair advantages. So that is the, these are some like we can say these are the most important functions which are generally played by the these financial regulators, ठीक है? तो सबके लिए एक डेडिकेटेड एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको आपका कहीं ना कहीं उनके लिए रूल्स रेगुलेशन प्रिपेयर करना, प्रोसेसेस सेट करना, और वहां पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, दैट इज द प्राइमरी रोल ऑफ these particular regulators. So when we talk about the list, so we have four major regulators. RBI, who generally regulate the entire banking system, like बैंकों को लाइसेंस देना, एंड इवन द प्राइस स्टेबिलिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आरबीआई। जब भी हम आरबीआई के फंक्शंस की बात करते हैं या एरियाज पे जाते हैं, ठीक है? देन वी हैव सेबी, विच जनरली रेगुलेट securities market, which include your share market, bond market, and well, like commodities market as well. Earlier there was one regulated called FMC, Forward Market Commission. So in September 2015 it get merged with SEBI. So nowadays
commodities derivatives are also regulated by SEBI itself, right? इसके अलावा IRDA आपका, so इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी इंटरमीडियरीज आपके हैं उनको रेगुलेट करना, या इंश्योरेंस सेगमेंट के जो कंज्यूमर्स हैं उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. PFRDA which generally take care about the pension funds, retirement schemes and others. ठीक है, so we will go through these particular one by one. बेसिक चीजें आप लोग जानते हैं, बट हाँ इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें आपकी हैं फॉर योर JIB एग्जामिनेशन, that I'll definitely cover in this particular unit, right? So first one we have RBI, the Reserve Bank of India. It was established on 1st of April 1935 under RBI Act 1934, and it was nationalized in 1949, January 1st, 1949, under Transfer of Public Ownership RBI Act 1948. ठीक है, सो बैंकों का लाइक दो मेजर एक्ट हैं, एक RBI Act 1934, अनदर वन लाइक 1949 के अंदर पास किया गया, दैट इज नोन एज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो जो BR एक्ट है वो आपका लाइसेंसिंग या अदर सारे एस्पेक्ट को आपका किस तरह, हाउ RBI विल गवर्न बैंकिंग सिस्टम, दैट इज जनरली गिवन अंडर दिस. एंड RBI Act 1934 is all about RBI powers and their functions. ये दोनों एक्ट हमने अपने पिछले सेशन में आपका डिस्कस किए हैं, सो ज्यादा टेंशन वाली चीज नहीं है. ठीक है, सो RBI इज द सेंट्रल banking institution in India responsible for regulating the country's monetary and financial system. Established on 1st April under this, RBI play a crucial role in the development strategy of the इंडियन गवर्नमेंट. ठीक है, सो दीज आर सम फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म बाय RBI. अब अगर आप अपनी मैकमिलन की बुक ओपन करेंगे, सो यू विल सी जितने भी फंक्शंस हैं उनको काफी डिटेल में आपका बताएगा, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी. सो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर उन्होंने लाइक दे हैव गिवन 3-4 पेजेस, बट जब आप अपना मॉड्यूल बी पढ़ते हैं तो वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप में एक सेपरेट यूनिट होगा. ठीक है, जब जैसा हम उसको कवर करेंगे, आया अदर आई विल कवर दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है, तो उसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और इवन फॉर करेंसी एंड अदर्स तो बेसिक चीजें हैं. हाँ, जो हाईलाइट्स हूँ मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI, फर्स्ट वन इज टू मेंटेन मॉनेटरी stability such that the business and economic life of the country can deliver welfare gain of the mixed economy. So that is something related to monetary policy, and the primary objective of monetary policy is to maintain price stability. Okay, through this particular policy RBI manage liquidity in the market, that means money supply, and we generally try to create a balance between inflation and economic growth, right? So आपका बहुत सारे टूल हैं, जैसे डायरेक्ट टूल हैं, इनडायरेक्ट टूल हैं. ठीक है, या क्वांटिटेटिव आपका या क्वालिटेटिव, इस तरीके से बाइफर्केशन, जिसमें CRR SLR या फिर LAF के अंदर आपका रेपो, रिवर्स रेपो, SDF, आपका TLTRO, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ऐसे बहुत सारे टूल्स जो बीच बीच में इंट्रोड्यूस भी किया जाता है, या फिर कुछ आपका जो परमानेंट काइंड के हैं. ठीक है, to maintain financial stability and ensure sound financial institution to the economic unit can conduct their business in the business with confidence, to maintain a stable payment system so that financial transaction can be safely and efficiently executed, to ensure the credit allocation by financial system broadly reflect the national economic priorities and social concern like PSL guidelines and others. ठीक है, और even financial inclusion is also part of this one. ठीक है, next one आपका to regulate the overall volume of money and credit in the economy, and to promote the development of financial market and system to enable itself ऑपरेट और रेगुलेट. ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक फंक्शंस हैं आपका या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एंड मोस्ट ऑफ यू लाइक इनको अगर हम लोग पढ़ते हैं, वी डू हैव दैट मच ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम इनको समझ सकते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई विल नॉट elaborate these particular one. अगर आपका कोई डाउट होता है किसी एरिया में, सो यू कैन मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन, राइट. नेक्स्ट वन आपका रोल एंड फंक्शंस. तो मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग जानते हैं. ठीक है, इसके अलावा इश्यूअर ऑफ करेंसी, ₹2 नोट एंड अबव जितने भी आपके डिनोमिनेशंस होते हैं, दे आर जनरली फॉर दोज पर्टिकुलर करेंसी नोट RBI इज द लायबल. ठीक है, सो RBI के ही सब उन्हीं के हिसाब से वो आपका पूरा प्रिंटिंग होता है. ठीक है, banker and debt manager of to the government, so bankers to the government of India, like through open market operations, जो government के requirements हैं, that is generally met by the RBI itself.
bankers to the bank, so there are so many tools who generally prove this particular one, जैसे repo rate है, reverse repo rate है, या others जो भी आपकी हेल्प होती है, ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग इन अदर्स. रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, maintaining financial stability, regulator and supervisor of payment and settlement system, PSS Act 2007, डेवलपमेंटल रूल आपका, ठीक है. तो ये फंक्शंस काफी ज्यादा डिटेल में आपके उसमें एक्सप्लेन किए गए एंड मोस्ट ऑफ यू आप इनके बारे में जानते हैं. अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी एरिया के अंदर, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड व्हेनेवर आई विल कम अप विद द क्वेश्चंस पार्ट, सो आई विल इंक्लूड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दीस पर्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है. दूसरा हमारे पास है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अ मार्केट रेगुलेटर फॉर कैपिटल एज वेल एज करेंसीज मार्केट, ठीक है. So SEBI is the regulator for securities market in India, established in 1988 and nationalized in 1992 under SEBI Act 1992, right? It play a key role ensuring the stability and integrity of Indian capital market. तो जैसे कुछ major functions अगर हम लोग बात करें duties का, so it is duty of board to protect the interest of investors in securities and to promote the development of and to regulate securities market, regulating the business in stock exchanges and any other securities market. इसके अलावा registering and regulating the working of stock brokers, sub brokers, share transfer agents, इसके अलावा trustees of the trust deed, registrar to an issue, merchant bankers, underwriters, portfolio managers, investment bankers and others. Registering and regulating the working of the depositories like NSDL, CDSL, depository participants, custodian of securities, foreign exchange, foreign institutional investors, FIIs, credit rating agencies and others. तीसरा आपका registering and regulating the working of venture capital funds and collective investment schemes, including mutual funds. Next one is promoting and encouraging self-regulatory organizations. Next one is prohibiting fraudulent and unfair trade practices related to securities market. Promoting investor education and training of intermediaries of securities market. Prohibiting insider trading in securities. Regulating substantial acquisition of shares and takeover of the companies. So these are some major functions which are generally performed by the SEBI itself, ठीक है. तो अगेन बहुत नोन है, बहुत कॉमन है, ठीक है. और अगर कोई भी किसी भी पार्ट में छोटा सा भी डाउट है, so do mention into the comment section. I'll definitely get back to you. Okay. So power of SEBI to regulate, prohibit, regulate or prohibit issue of prospectus or offer documents or advertisements soliciting money of issue of securities. जैसे कोई भी कंपनी जब अपने आप को लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, सो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है. तो उसमें दैट इज समथिंग दिस कि आरबीआई चाहे तो उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, जिससे वो आपका पब्लिक होने से बच जाए, ठीक है. मतलब दे कैन नॉट बी पब्लिक एंड दे कैन नॉट सेल देयर शेयर्स टू द पब्लिक without prejudice of the provision of Companies Act 1956. SEBI may, for the protection of investor specified by the regulation, the matter of relating to issue of capital, transfer of securities, and other matter including thereto, the manner in which such matters shall be disclosed by the companies. By general or special orders, prohibit any company from issuing prospectus. Prospectus एक document होता है which generally आपका it's a kind of advertisement document which are generally issued by companies about their IPO FPO process, ठीक है. जब कोई कंपनी अपना पब्लिक इशू लेके आती है तो वो एक पूरा डॉक्यूमेंट रिलीज करती है. अब ये जो प्रोस्पेक्टस है इसको रिलीज करने से पहले रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट, जहां पे चाहे तो सेबी उसको मना कर सकता है, ठीक है. और इट इज अ फर्स्ट स्टेप इन योर आईपीओ और एफपीओ जर्नी, ठीक है, जिसमें वो कहीं ना कहीं एडवर्टीज कर रहा होता है कि इस डेट में हमारा आईपीओ आएगा, ये आपका बेस प्राइस फ्लोर प्राइस रहेगा या अदर सारी चीजें जिसमें रहती है, ठीक है. Any offer document or advertisement soliciting money from the public for the issue of securities specify the condition subject to which the prospectus, such offer documents or advertisement if not prohibited may be issued, ठीक है.
without prejudice to the provision of Section 21 of Securities Contract Regulation Act 1956. 42 of 1956 section may specify the requirement for the listing and transfer of securities in other मैटर्स इंसिडेंशियल देयर टू, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और मतलब थोड़ा नॉलेजेबल भी है। जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, दिस प्रोसेस एंटायर इज जनरली पार्ट ऑफ योर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट, जिसमें देयर आर सम एलिजिबिलिटीज, सो कंपनीज दे नीड टू मीट विद दोस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटीज। अगर वो नहीं मिल पाते हैं, सो लाइक सेबी, मतलब इट इज टोटली इन द हैंड ऑफ सेबी, वो चाहे तो अप्रूव कर सकता है, या इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे कैन प्रोहिबिट दैट पर्टिकुलर कंपनी फॉर द पब्लिक इशू, फॉर द पब्लिक इशूअर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो नाउअडेज इंश्योरेंस बिजनेस इज ग्रोइंग एट अ वेरी ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। तो IRDA का रोल आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। IRDA 2000 में स्टेब्लिश हुआ था अंडर IRDA एक्ट 1999, राइट। So it regulate insurance sector in India, including general as well as life. Earlier we have for life insurance LIC Act 1956. For general insurance it is GIC business 1972. तो इन दोनों को क्लब करके हमने आपका IRDA का establishment किया। इन privatization भी शुरू हुआ। IRDA is a statutory body tasked with the regulation and promoting of insurance industry. In 1999 under the IRDA Act, its role is vital to ensuring that the insurance sector functions with integrity, transparency, and in the best interest of the policy holders. Again, we have some major IRDA was get established on the recommendation of मल्होत्रा कमेटी, ठीक है। ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इनके रिकमेंडेशंस आपका क्या क्या थे, जैसे अगर हम लोग बात करें कुछ मेजर रिकमेंडेशंस आपका, टू सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री and to assess a strength and weakness of insurance companies in term of objective of creating an efficient and viable insurance industry. To make recommendations for changing structure of insurance industry, for changing up general policy frame, to make specific suggestions regarding LIC and GIC with a view to improving their functioning, to make recommendations on the regulation and supervision of insurance sector in India. तो IRDA का जो फॉर्मेशन हुआ था दैट वाज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कमेटी, ठीक है। सो विद द व्यू ऑफ रिफॉर्मिंग इंश्योरेंस सेक्टर एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्शन to it, the central government formed a committee in 1993 which was headed by former finance secretary and RBI governor RN Malhotra. इन्हीं के recommendations पे RBI को establish आपका किया गया था, ठीक है। So duty, power and functions of IRDA. So IRDA के संबंध में आपका अगर हम बात करें, पहला पावर एंड फंक्शंस ऑफ IRDA, जैसे फर्स्ट इशूइंग ऑफ एप्लीकेशन, issuing to the applicant a certificate of registration, renew, modify, withdraw, suspend or cancel such registration, ठीक है, licensing आपका। Protection of interest of policy holders in matter concerning assigning of a policy, nomination by policy holders, insurable interest, settlement of insurance claims, surrender value of policy and other term and condition. Specifying request qualification, request qualifications, code of conduct and practical training for intermediary or insurance intermediaries and agents. Specifying the code of conduct for surveyor or loss assessor, ये हमने पढ़ा भी था, इसके लिए specific sections आपका अगर याद होंगे। Promoting efficiency in the conduct of insurance business, promoting and regulating professionals organizations connected with insurance and reinsurance business, levying fee and other charges for carrying out a purpose of this act, calling for information form, undertaking inspections of conducting inquiries and investigation including audits on the insurance companies, intermediaries, agent and others, control and regulation of the rates, advantages, term and conditions that may be offered by insurance companies, specifying, do remember the section, specifying of the form and manner in which book of account shall be maintained and statement accounts shall be rendered by the insurance companies. तो insurance companies के जो final accounts prepare होंगे उनके format and others, जैसे बैंकिंग कंपनीज के BR एक्ट में है वैसे यहाँ पे रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज, investment by funds
जैसे जो आपका कलेक्टिव स्कीम उन्होंने पैसा इकट्ठा किया इंश्योरेंस पॉलिसीज का, देन दे इन्वेस्ट इन सम अदर एरियाज, तो वो आपका दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय दिस। रेगुलेटिंग मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंश्योरर एंड इंटरमीडियरीज, एंड इसके अलावा आपका सुपरवाइजिंग दी functioning of tariff advisory committee आपका। So these are the role and responsibilities which are generally played by the IRDA। ठीक है, अगला हमारे पास है PFRDA। सो पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करता है आपका पेंशन और रिटायरमेंट स्कीम्स को। ठीक है, so PFRDA is a statutory authority responsible for regulating and promoting of pension sector, established in 2003 and act was passed in 2013। please do remember this। ठीक है, आपका इसका एक्ट आपका थोड़ा सा लेट पास हुआ था, PFRDA एक्ट 2013। इट एम टू इंश्योर द सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव पेंशन सिस्टम इन द कंट्री। सो फंक्शंस ऑफ PFRDA, क्या क्या मेजर फंक्शंस हैं? इसका आपका अथॉरिटी टू प्रमोट ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी बाय एस्टेब्लिशिंग, डेवलपिंग एंड रेगुलेटिंग पेंशन फंड्स, टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स टू द स्कीम ऑफ पेंशन फंड्स and for matter connected therewith or incidental thereto। The role are जैसे first to promote pension scheme in the country by fostering mandatory as well as voluntary pension schemes। National pension system NPS both tier 1 and tier 2 are under the purview of PFRDA। जो भी जैसे आपका UPS आपका जो NPS का नया वर्जन लाया जा रहा है, earlier it was OPS then NPS, now it is UPS, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो अभी रिसेंटली पास किया गया। सो इट कैन बी अ क्वेश्चन आने वाले एग्जामिनेशन में। PFRDA प्लेटफॉर्म परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अपॉइंटिंग वेरियस इंटरमीडियरीज एजेंसीज लाइक पेंशन फंड्स मैनेजर्स, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसीज एक्सेट्रा। जैसे अलग अलग स्कीम्स होती हैं, तो कौन उसके लिए आपका पॉइंट ऑफ बेसिकली हम लोग उसको बोल सकते हैं कि नोडल एजेंसी की तरह कौन काम करेगा। मोस्ट ऑफ उसमें LIC आप देखते होंगे, लाइफ से रिलेटेड है। एजुकेटिंग जनरल पब्लिक एंड आपका ट्रेनिंग इंटरमीडियरीज, एड्रेसिंग ग्रीवेंस आपका ग्रीवेंसेस, एड्रेसिंग एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन इंटरमीडियरीज और अदर पार्टीज। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय दिस। कुछ मैं नोट्स आपको दे देता हूँ हर क्लास के एंड में। जैसे सेबी के संबंध में आपका रेगुलेशन है बेसिक। ठीक है, RBI आपका रेगुलेशन एंड अदर्स, कुछ एक्ट आपका आई शेयर दिस नोट विद यू, तो आप इनको एक बार गो थ्रू करते रहेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड दिस वाज एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, बट हाँ आपका FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड आई जस्ट मिस दिस फुल फॉर्म। हाँ ठीक है, FSDC, okay, just I'm not recalling that particular one। ठीक है, so financial sectors, मतलब this FSDC आपका it's a kind of regular meetings which is headed by finance minister। FSDC की meetings होती है ना on monthly basis where finance ministers had this particular meeting। ठीक है, finance minister आपका head करेगा and they generally talk about the overall development in the आपका बैंकिंग सिस्टम और द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल और समथिंग जो आपका जिसको हम लोग बोलते हैं, इट इज गवर्न बाय हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। सेबी के बारे में हमने पढ़ा, IRDA के बारे में हमने डिस्कस किया, PFRDA के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा RBI ARC को रेगुलेट करता है, पुराना है। ठीक है, सेबी हमने डिस्कस किया। FMC अर्लियर देयर वाज अ सेपरेट रेगुलेटर फॉर आपका कमोडिटीज डेरिवेटिव, बट नाउ इट इज कम अंडर द RBI। ठीक है, 2015 आपका सितंबर 2015 जब ये मर्ज हुआ था किसमें, आपका सेबी के अंदर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो आपके बुक में, इन विच ईयर RBI वाज नेशनलाइज्ड, तो क्या होगा आंसर आपका 1 जनवरी 1949 एंड एक्ट वाज RBI ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। ठीक है, हाउ मेनी टाइम एट द मिनिमम डज मॉनेटरी पॉलिसी मीट, सो एज पर एक्ट आपका MPC एक्ट इट इज 4। यूजुअली आप देखेंगे बाई मंथली मीटिंग्स होती है, सो दे जनरली मीट फॉर 6 मंथ, दिस इज मिनिमम। What is the rate of interest payable on CRR? CRR पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, how many full time members are there in SEBI? SEBI के full time members are 3 as per my knowledge, you can cross check this। ठीक है, under the recommendations of committee was IRDA established। तो IRDA किसके recommendations पे आपका बना था, मल्होत्रा कमेटी 1993, राइट।
बहुत बेसिक है आपका CRR। जब आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे उसमें भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पोर्शन ऑफ NDTL दैट जनरली बैंक मेंटेन विद RBI in the form of cash, and RBI does not pay any interest on the CRR. Okay, which of the following is not a core function of RBI as a financial regulator? So the first question is based on RBI itself. तो RBI का कौन सा रोल नहीं है? So regulating the forex exchange market and managing currency stability. So RBI is generally known as custodian to forex or foreign exchange. That means this comes under the RBI functions team. Supervising pension funds and ensuring their sustainable growth. This comes under the purview of PFRDA, Pension Fund Regulatory Development Authority of India. So this is incorrect about RBI. So option B, implementing monetary policy to control inflation and economic growth, overseeing asset reconstruction companies ARCs to resolve non-performing asset. Yeah. So ARCs, all the registered ARCs, they also comes under the RBI purview, right? So what will be your correct answer? Option B, which is incorrect about the responsibilities of RBI itself. So RBI is responsible for monetary policy implementations, currency regulation, forex market supervision, and financial stability. PFRDA, which is responsible for your pension funds and all, right? So if you talk about the RBI functions, role and functions, same. So RBI undertake numerous activities all related to nation's financial sector, encompassing and extending beyond the functions of this. So it include monetary authority. RBI work as a monetary authority, issuer of currency, bankers and debt manager for government of India to government of India, bankers to bank, regulators of banking system, manager of forex, custodian of foreign exchange, maintaining financial stability, regulator and supervisor of payment and settlement system act, and development rule. Okay, so these are some major or the core areas which are generally get performed through the RBI itself, and we all are aware about these particular things. This is one of the simplest question. So I hope you get this particular thing clearly, right? तो पहला क्वेश्चन आपका RBI के functions के ऊपर. We will practice a few more questions. ठीक है. So which of the following best describe the primary role of RBI in ensuring financial system stability? ठीक है. So RBI generally known as to manage the overall financial system and to have some sort of stability in our existing system. So which of the following is correctly matched with this particular one? So what will be your correct answer? Facilitating growth of private banking, maintaining financial stability, ensuring sound financial institutions, providing direct credit to economic, no, controlling, no. So what will be your correct answer? Maintaining financial stability and ensuring sound financial institutions. That is the right one about this particular one. Again, very easy question. Next one. So basically, the main objective of RBI is maybe stated following. To maintain monetary stability, such that the business and economic life of the country can deliver the welfare gain of a mixed economy, to maintain financial stability and ensure sound financial institution so that economic unit can conduct their business with confidence, to maintain stable payment system so that financial transaction can be safely and efficiently executed, to ensure that credit allocation by financial system broadly reflect the national economic priorities and social concern, to regulate the overall volume of money and credit in the economy, which is all about the money supply. Okay. To ensure the reasonable degree of price stability, to promote the development of financial market and system to enable itself to operate or regulate. Okay. So these are some core activities or core functions or the major objectives of RBI itself. Okay. Very easy one. And for that sake, RBI have so many acts which we have already discussed in our past also. Okay. Like two core act
BR Act for the supervision of banking system, and RBI Act who generally give power to RBI. But apart from this also, like act like FEMA, Foreign Exchange Management Act 1999, Payment and Settlement System Act 2007, and other also. Okay, so they have given right to RBI to make a balance or to create financial stability in our economy itself, right? Next one. What was the primary objective behind introduction of SDF, Standing Deposit Facility, in 2022? So see, SDF is similar to reverse repo rate. ठीक है? So reverse repo rate के बारे में हम लोग जानते हैं. Reverse repo rate is like the rate at which commercial bank they generally deposit their surplus money with RBI. So the cash flow is generally commercial bank to RBI, and RBI provides security in that particular case. ठीक है, collaterals basically. ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? कमर्शियल बैंक दे डिपॉजिट देयर एक्सेस मनी विद आरबीआई, एंड आरबीआई प्रोवाइड कोलेटरल अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर against those particular deposits. ठीक है, so it is the tool basically through which RBI आपका जो मार्केट का मनी सप्लाई है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए इसको यूज कर रहा होता है. ठीक है, सो एंड if you talk about the SDF also, yeah, so that is the same definition where commercial bank deposit their surplus money with RBI, but it is without collateral, and the rate is आपका like it is much higher, just double of the kind of your reverse repo rate. ठीक है, so एक आपका कोलेटरल के साथ है तो इंटरेस्ट रेट कम है, दूसरा आपका विदाउट कोलेटरल है एसडीएफ आपका जो इंट्रोड्यूस किया गया, तो जिससे लाइक अगर हमें मार्केट से मनी को या जो एक्सेस मनी है उसको कंट्रोल करना है, सो दिस टूल इज काइंड ऑफ सुटेबल. ठीक है, so to provide bank with an alternative to marginal standing facility, no, MSF is like cash flow is RBI to commercial bank for overnight borrowings, and it is for kind of the tool under which bank they can borrow for emergency fund or the ultra short term requirement which is overnight. ठीक है, to observe excess liquidity from banking system without requiring collateral. So this is a true answer. ठीक है, I hope you get this particular thing. आगे जाने की जरूरत भी नहीं है हमें. ठीक है, so yes, so आपका SDF was introduced to help RBI to observe surplus liquidity without offering government securities as collateral. It enhances monetary policy effectiveness by mopping up excess funds from bank to control inflation itself. It is similar to reverse repo rate, but the only thing is reverse repo rate is without collateral and this is with collateral. Okay, that's why RBI offer higher interest in this in case of SDF itself, right? Next one. Which of the following action by RBI is most directly aimed at reducing systemic risk in the financial system? I hope you guys are aware about this risk called systemic risk. Systemic risk is basically it is failure of one bank lead to failure of other bank or other financial institution, as it happened in with global financial crisis 2007-8. ठीक है, तो global financial crisis में क्या हुआ था? लेमन ब्रदर बैंक आपका विच वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक फ्रॉम यूएस, ये डिफॉल्ट हुआ, सो इट लीड डिफॉल्ट टू अदर स्मॉल बैंक ऑल्सो. ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज स्मॉल बैंक दे हैव देयर डिपेंडेंसी ऑन लार्जर बैंक. अब ये बड़ा बैंक डिफॉल्ट हुआ तो ये ऑटोमेटिकली आपका डिफॉल्ट होना स्टार्ट हुआ. दिस इज जनरली नोन एज it is generally called ripple effect. ठीक है, so it created a ripple effect, and contagion effect is like which impact to other economies also. ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा ना हो, for that sake what Basel 3 or BCBS committee, Basel Committee on Banking Supervision, they suggest, they come up with a concept called DSIB or GSIB, Global Systematically Important Bank. In India it is DSIB, Domestic Systematically Important Bank. Okay, so these larger banks like SBI, ICICI and SDFC, they have to maintain or they have to keep some additional capital compared to which is applied to the normal bank itself. ठीक है, like let's say SBI को सबसे ज़्यादा capital maintain करना पड़ता है. That is reason being कि that is one of the largest bank in India. ठीक है, अगर उसको कुछ होता है that means there is short recession or failure of the entire banking system itself, right? So इसके लिए and even during that particular period we to meet with this liquidity things. ठीक है,
So we come up with LCR, liquidity coverage ratio. We come up with NSFR. We come up with काउंटर साइक्लिकल बफर्स, ठीक है, कि अगर आपके गुड टाइम में जब आपका अच्छा बिजनेस इकोनॉमी बूम पे है तो एडिशनल बफर क्रिएट करो, सो वी कैन यूज दैट अमाउंट फॉर अ बैड टाइम, ठीक है। इसके अलावा आपका काउंटर साइक्लिकल बफर्स और सीसीबी वाज देयर, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें आपका जो यहाँ पे लाई गई, ठीक है। सो इम्पोजिंग कैप ऑन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नो। Implementing Basel III norms, including capital adequacy and liquidity buffers, हाँ, which include जैसे आपका काउंटर साइक्लिकल बफर्स है, ठीक है, या फिर आपका आपका CAR प्लस है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका LCR का रिक्वायरमेंट्स है, NSFR आपका NSFR, तो these are were the recommendations during that particular period which created an additional layer on your CRR itself, CAR itself, ठीक है, जिसको हम CRAR के नाम से जानते हैं, ठीक है। So this was the take which is generally done by the which is also adopted by RBI to protect from any kind of systemic risk itself, right? तो जिसमें आपका जैसे हाँ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, कैपिटल, जैसे earlier we have the CAR, ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CRAR जिसको हम इंडिया में बोलते हैं, it was 9%. So what we did, we have done a capital हायर कैपिटल रेशियोज जिसमें आपका जिसमें आपका था CCB, ठीक है, सो दैट वाज 2.5%, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो वी क्रिएटेड वन अनदर बफर दैट इज काउंटर साइक्लिकल बफर्स, ठीक है, आपका 3% इन बेसिकली ऑन लिवरेज थिंग्स इन ऑल, ठीक है, leverage ratio, sorry, ठीक है, this was also suggested but leverage ratio was one another of 3%, ठीक है। इसके अलावा we generally ask bank to maintain LCR, liquidity coverage ratio, or NSFR greater than at like with a ratio of greater than equal to 100%, ठीक है। So how we calculate LCR? High quality liquid asset divide by नेट कैश आउटफ्लो फॉर 30 कैलेंडर डेज, ठीक है, 30 दिन में जितना आपका पेबल्स है उससे ज्यादा का अमाउंट आप बफर बना करके चलेंगे एट ए टाइम, ठीक है। एनएसएफआर इज बेसिकली रिलेटेड टू सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आपका, तो स्टेबल सोर्सेज ऑफ फंड्स यू हैव टू मेंटेन दोस पर्टिकुलर वन विद रिगार्ड टू योर आपका जो पेबल्स हैं, ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड ऑल, सो दीज वर काइंड ऑफ द थिंग्स व्हिच गेट अडॉप्टेड टू मीट these kind of economic crisis, ठीक है। According to SEBI regulation, so now the another regulator, which of the following actions can SEBI take to protect investor in the securities market? It can issue regulation specifying matters related to issue of capital and transfer of security. पहला ही सही है, ठीक है। It can prohibit any company from issuing prospectus or offer documents soliciting money from the public. This can be done. Okay, अच्छा. It can specify condition under which an offer document may be issued. Yes, all of the above. ठीक है, ये सारे ही आपके क्या हैं, करेक्ट है, ठीक है। सो नाउ इट इज ऑल अबाउट पब्लिक इशू, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, कोई कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट कर रही होती है, ठीक है। सो फर्स्ट दे हैव टू अप्लाई विद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। सो सेबी विल डू द स्क्रूटनी थिंग्स, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो वी हैव ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स कि जैसे 3 साल में प्रॉफिट में होना चाहिए या इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए या 10, ऐसा सब कुछ, दैट इज ऑल्सो नोन एज द एंटायर बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले दे अप्लाई टू सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास हो जाएंगे, ठीक है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस इफ anything is missing from the SEBI requirements, so SEBI do have right to kind of to disapprove that particular process, ठीक है। तो वो इनके हिसाब से आपका basically to protect the interest of investors, so they generally do these kind of activities. तो यहाँ पे क्या क्या requirements होंगे और क्या क्या चीजें आपकी जो disclosures होंगे and everything which is generally done by SEBI itself, ठीक है। So these all comes under this particular one. Prospectus is basically this is the very first document which is generally introduced by company while they come while they go through that book building process or it is also known as red herring prospect, ठीक है। जिसमें basically after getting approval from SEBI they generally do some sort of advertisements कि हमारी कंपनी का आईपीओ इस डेट पे आने वाला है एंड ये हमने एएफएम के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे इन सब चीज, इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि वहां पे बुक बिल्डिंग प्रोसेस
कंपनी अकाउंट 1 के अंदर आपका पूरा है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस फर्स्ट कंपनी विल काइंड मेक it is a kind of advertisement documents where company will let know about their the upcoming process कि हाँ इस डेट पे आएगा, these are the merchant bankers, this is our floor price, this will be the upper price, this will be the proceed from that particular investment, कहाँ पे हम इसको खर्च करेंगे, everything आपका, ठीक है। देन आपका सेकेंड स्टेज होता है एप्लीकेशन बाय द इन्वेस्टर्स, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, एंड द थर्ड वन इज अलॉटमेंट्स आपका, ठीक है। सो there are some functions. It is duty of board to protect the interest of investor in securities and to promote the development of and to regulate the securities market by पहला आपका regulating the business of stock exchanges जितने भी हैं आपके, ठीक है, and other securities market. B आपका where we have two major responsibilities, registering and regulating the working of stock brokers, sub brokers, share transfer agents, bankers to issue and issue, trustee of the trust deed, registered registrar to an issue, merchant bankers, underwriters, portfolio managers, or any other participants in this particular market. Registering and regulating the working of depositories like NSDL, CDSL, depository participants like your bank, custodian of securities. Then we have foreign institutional investors, credit rating agencies also. C is registering and regulating the working of venture capital funds and collective investment schemes like mutual funds. D आपका promoting and increasing self-regulatory organizations like in case of mutual fund we have AMFI, Association of Mutual Funds in India, and others also. ठीक है। E आपका prohibiting fraudulent and unfair trade practices like insider trading. F is आपका monitoring investors education and training of intermediaries of securities market. G आपका prohibiting insider trading in securities. H आपका regulating substantial acquisitions of shares and takeover of companies as well, ठीक है। Insider trading I hope you all know, ठीक है, it is like very famous in corporate world. So it is like when any information before being public it got leaked, that is generally known as insider trading, ठीक है। If you are an active trader, I hope you know about some companies, जैसे आपका इन्फोसिस का जब भी रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो उसका प्राइस जो मूवमेंट है ना, यू विल सी वेरी शार्प मूवमेंट इन द प्राइसेस ऑफ इन्फोसिस कंपनी, ठीक है, 10% ऊपर, 15% ऊपर। सो सपोज दैट अब लग एक मतलब अज्यूम करो यू हैव इन दैट इंफॉर्मेशन प्रायर लाइक बिफोर दैट इंफॉर्मेशन बीइंग पब्लिक, ठीक है। मतलब जैसे इन्फोसिस के बोर्ड में आपका कोई फ्रेंड है जिसने आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी, व्हाट यू विल डू, you can make unrealistic profit from that particular one, ठीक है। अगर रिजल्ट अच्छे होने वाले हैं तो एक दिन पहले आप इन्फोसिस के बहुत सारे शेयर खरीद लोगे, ठीक है। जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होंगे दैट विल गो लाइक 15%, 20% अप, तो दैट मीन्स 15% या 10% का प्रॉफिट बनाने के लिए भी वी हैव टू वेट फॉर द इंटायर ईयर्स और 2 years, 3 years, ठीक है। दैट यू कैन मेक विद इन फर्स्ट ट्रेडिंग आवर ऑफ दैट रिजल्ट डे इटसेल्फ, राइट। तो ऐसी एक्टिविटीज आपका जो इलीगल है मार्केट के अंदर, ऐसी एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना इज ऑल्सो जॉब ऑफ सेबी इटसेल्फ, ठीक है। कई बार आपके न्यूज में रहता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस पावर ऑफ सेबी टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट, जिस पे हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। प्रोस्पेक्टस इज बेसिकली आपका जो ऑफर डॉक्यूमेंट्स कंपनीज के द्वारा जब कोई कंपनी अपने आप को पहली बार मार्केट में लिस्ट कर रही होती है, ठीक है। ऑफर डॉक्यूमेंट और एन एडवर्टीजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और बीइंग पब्लिक. So without prejudice to a provision of Companies Act 1956, now it is 2013, SEBI may be SEBI may, for the protection of investor, they can do specify by regulators the matter relating to issue of capital, transfer of securities, and other matter incidental thereto, and the manner in which such matter shall be disclosed by the companies itself. So these are kind of according to this. You have to meet with the requirements of SEBI before coming or before being public. By journal or special order, prohibit any company by issuing prospectus and offer document or advertisement soliciting money from the public for the issue of securities, or specify the conditions subject to which
the prospectus, such offer documents or advertisement document, if not prohibited, may be issued. ठीक है? So without prejudice of to the provisions of section 21 of SEBI Act 1956, sorry, Securities Contract Regulation Act, ठीक है? Securities Contract Regulation Act 1956, 42 of 1956, ठीक है? SEBI may specify the requirement for listing and transfer of securities and other matter incidental thereto. So basically the requirements about that particular companies, like if before being public, you have to meet with these particular requirements. If you are not meeting those particular requirements, SEBI can put some sort of stay, or like they can reject your application. Then that means you cannot raise funds from the capital market. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. Under what conditions SEBI prohibit a company from issuing a prospectus, offer document, or advertisement? One thing. If a company has not obtained approval from Ministry of Finance, नहीं यहाँ पे SEBI ही आपका disapprove करेगा. ठीक है? If SEBI issue general or special order prohibiting the such issues, so this generally comes under the power or preview of SEBI itself. ठीक है? So SEBI has the authority to prohibit a company from issuing securities related documents through a general or special order. General और special order जो भी हमने यहाँ पे देखे थे. ठीक है? This is आपका and this is आपका. ठीक है? मतलब general, special, और this is the specified regulations also. ठीक है? Next one. How does SEBI regulatory framework for alternative investment funds, AIFs, contribute to financial stability? So there are lot many AIF which generally get licensing from SEBI itself, and they are generally working as a kind of mediators or participants in this particular market. Yeah. So by ensuring that only public sector entities know, by setting minimum capital requirements, yes, there are minimum capital requirements. It depends on industry to industry also, or business type to business, and investment restrictions to reduce speculative risk. आपका ठीक है 100% true. SEBI regulate alternative investment funds by setting capital requirements, restricting speculative investment, and defining investment categories like category 1, 2, 3. ये आपका जैसे हमने डिस्कस किया था ना, maximum right that generally belongs to आपका category 1 itself. ठीक है? Which of the following was a key reason for merging the Forward Market Commission (FMC) with SEBI in 2015? So in the year, or during the budget 2015-16, government or Ministry of Finance, they generally propose कि we will merge FMC into SEBI, and it happened during the month of September 2015 onwards. So FMC, which till that time, it used to regulate the commodities derivative. ठीक है? तो आपका से अभी like right now commodities derivative are also get regulated by SEBI itself. But इससे पहले आपका जो commodities derivative का regulation था वो किसके द्वारा था? We have one separate regulator which is known as FMC. But ये आपका जो commodities derivatives है और जो equity derivatives या others, तो सेबी की तरह ही वो आपका काम कर रहे थे. वी जस्ट हैव वन एडिशनल नंबर. ठीक है? तो कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए व्हाट गवर्नमेंट डिड और दे प्रपोज the merger of these particular one. To bring uniformity and strong regulatory oversight in both securities and commodity market only will be right answer for this one. Okay? So before 2015, commodities derivative were regulated by FMC. The merger of FMC with SEBI brings securities and commodity market under a unified regulatory framework, which is SEBI, ensure stronger oversight and preventing मार्केट मैनिपुलेशंस. ठीक है? तो सारी चीजें आपका आप SEBI के अंदर ही आपकी होती है. ठीक है? नेक्स्ट वन. What was the primary objective of Malhotra Committee? So Malhotra Committee was related to insurance, development of insurance in our country. It was founded in 1993, and based on Malhotra Committee recommendation itself, we form a regulatory body which is known as IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority of India Act 1999, and it will start working from April 2000. Okay? So to nationalize all private insurance companies, no. To create more efficient and competitive financial system, particularly for insurance sector. Okay? So Malhotra Committee
was established to reform the insurance sector and make it more efficient and competitive within the overall financial system. Okay. And with recommendation of Malhotra committee itself, we pass an act and we build up one separate regulatory body for this one. Okay. So Malhotra committee objective and recommendation, very important guys, very important. Okay. So with a view, I guess we have discussed this particular one with insurance product in your module D itself. Okay. So with a view to reforming the insurance sector and providing direction to it, the central government formed a committee in 1993 headed by former Finance Secretary and RBI Governor R.N. Malhotra. The reform were aimed at creating a more efficient and competitive financial system suitable for the requirement of the economy, keeping in mind the structural changes currently underway and recognizing that insurance is an important part of the overall financial system where it was necessary to address the need and similar reforms. The task set out before the committee were to suggest, these are the key objective to building this particular committee, to suggest the structure of insurance industry, to assess some strength and weakness of insurance companies, to make recommendations for changing structure of insurance industry, to make specific suggestion regarding LIC and GIC with a view to improving their functioning, to make recommendations on regulation and supervision. So these were the expectations from the this particular committee. तो basically इन areas के ऊपर आपका इनको study करने के लिए आपका build up किया गया था. Then with the recommendation of this only we come up with the IRDA Act. इन्होंने आपका recommendation किया and we form one separate regulators that is generally known as आपका IRDA itself, and they also come up with some sort of suggestions like a prudential requirement for this one thing and how we can focus on interest, how to protect the interest of customers in this particular market. So there are so many requirements or suggestions which are generally given by this particular committee itself. Okay. How does IRDA contribute to consumer protection in the insurance sector? By by ensuring that only government-owned insurance companies operate, no, by regulating insurance companies and ensuring fair practices policy holders. So very easy one. C will be right answer. Next one. Duty, power, and functions of IRDA. Okay. So IRDA has the duty to regulate, promote, and ensure orderly growth of insurance business and reinsurance business. The power and function of IRDA are, so these are this is the list. Issuing to applicant a certificate of registration. Applicant means आपका insurance company is not in. Renew, modify, withdraw, suspend, or cancel such registration. Protection of the interest of policy holders. Specifying requisite qualifications. Qualification, code of conduct, practical training for intermediary or insurance intermediaries and agents. Specifying the code of conduct for surveys or loss assessors. Survey जो आपका like based on the surveyors or loss assessor, based on these particular one only we decide the premium, or actuaries they generally do the calculation of the premium itself. Okay. Promoting efficiency in conduct of insurance business, promoting and regulating professional organization connected with the insurance and reinsurance. Then we have levying fee and other charges, sealing for information from undertaking inspections of, conducting inquiries and investigation, including audit of the insurer, intermediaries and all. They're calling for the information from or undertaking inspections or this. तो जैसे RBI करता है on bank, बस same आपका IRDA do it on insurance companies. Control and regulation of the rate advantages, term and conditions that may be offered by the insurance in respect of general insurance. Specifying the form and manner in which
book of accounts shall be maintained, and statement of accounts shall be rendered by the insurance companies, ठीक है, their final reports and all, ठीक है. Regulating investment of funds by insurance companies, regulating maintenance of the margin of solvency, ठीक है. Education of dispute between insurer and intermediaries, and supervising the functioning of the tariff advisory committees. So these are the functions which are generally performed by IRDA itself. So anything related to insurance, so उससे related आपके सारे activities which are generally governed and supervised by this particular regulators. ठीक है, next one. Under ADA regulation, which of the following is a mandatory solvency requirement for insurance companies in India? So, maintaining a solvency margin of 150% to ensure financial stability. First one is right. Investment of 100% policy holders in government securities. No, it is not mandatory. Holding a minimum capital adequacy. आपका no. Allocating a fixed percentage premium income in rural insurance. Option A is the right answer for this one. Yes. So IRDA mandate that insurance companies maintain a solvency margin of at least 150%, ensuring they have adequate reserve to meet policyholder claim. B was incorrect. Insurance companies must diversify investment, not allocate 100% in government securities. Capital adequacy ratio are used in banking, not in insurance companies. While rural insurance is encouraged, it is not solvency requirement itself, right? Next one. What is the primary aim of PFRDA, Pension Fund Regulatory Development Authority of India? Now, name itself tell about the workings. So to provide direct pension payments, no. To promote old age income security by establishing, developing and regulating pension funds. ठीक है, तो नाम से clear होते हैं. The pension funds regulatory and development authority of India aimed to ensure old age income security by regulating pension funds and protecting subscribers interest itself. ठीक है, तो जैसे आपका सेबी है इन केस ऑफ आपका कैपिटल मार्केट, आरबीआई इन केस ऑफ बैंकिंग. सिमिलरली फॉर द पेंशन बिजनेस वी हैव आपका पीएफआरडीए. ठीक है, सो द परमिसिबल द प्रीएम्बल ऑफ पीएफआरडीए state that aim of authorities to promote old age income security by establishing, developing regulation pension funds to protect the interest of subscribers to a scheme of pension funds, and for matter connected therewith or incidental thereto. The role played by PFRDA under team. तो जो इसकी preamble आपकी है जो प्रस्तावना है उसमें they have mentioned this exact line and all. So to promote a pension scheme in the country by fostering mandatory as well as voluntary pension schemes, National Pension System NPS, both tier 1 and tier 2 are under the preview of PFRDA and are regulated by the same. ठीक है, तो पेंशन प्रोडक्ट्स, ठीक है, मॉड्यूल डी हमने जहाँ पे पढ़े थे पेंशन प्रोडक्ट आपका, we have discussed or like we have discussed about these different schemes or PFRDA establishment functions also. ठीक है, PFRDA perform the function of appointment. तो वहाँ पे जो टॉपिक है ना डी के टॉपिक इज लाइक को टू द products or services what we generally deliver to our customers. Here it is about the regulatory things. आपका background उनका जो है वो पूरा. ठीक है, so PFRDA perform the function of appointing various intermediate agencies like pension fund managers, central record keeping agencies, point of presence agencies and all. Educating the general public and stakeholders about the importance of pension. Training of intermediaries, addressing grievances, addressing and resolving dispute between various intermediaries also, right? Next one. What is the primary objective, the pension PFRDA? So PFRDA का primary objective, so that we have gone through the जो इसकी preamble जो आपकी है, ठीक है, उसी में आपका mention किया गया था. ठीक है, so managing foreign नहीं, overseeing pension funds and ensuring sustainable retirement income system. So that is
kind of the right answer for this one. ठीक है, next one. Which of the following is not a function of PFRDA? Appointing various intermediary agencies like PF, thus educating the public and stakeholders about the insurance importance of pensions, yes. Managing bank account, no. ठीक है, managing bank account. Addressing the grievance related to various pension schemes, true. ठीक है, so आपका C will be right answer. Next one. Which of the following regulatory changes significantly improve transparency and investor confidence in India's capital market? ठीक है, तो फिर से अब थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे. सो वन बाय वन हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं, थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, the introduction, regulatory changes significantly improve transparency and investors confidence in India's capital market. ठीक है, तो अब देखो, this is not about the capital market rates आपका. ठीक है, SEBI, which is capital market regulate, which mandate require listed companies to report financial report within 30 days of the quarter end. ठीक है, जैसे let's say there is a company who like this say आपका first quarter which got ended like April, May, June. तो July within 31st July, 30th July you have to present your data with SEBI. ठीक है, जो आपके interim reports होते हैं, condensed balance sheet, profit and loss account and cash flow statement. So that is you have to make it public. ठीक है, तो that is the things which generally comes under RBI which regulate banking system, IRDA which regulate insurance. So logically भी ये question आपका solve हो जाता है. ठीक है, so SEBI financial disclosure regulations ensure timely and educate reporting, improving investor confidence and market transparency. How does Financial Stability and Development Council (FSDC) contribute to India's financial regulator? So FSDC, which is chaired by the finance minister. ठीक है, तो इसको आपका finance minister chair करते हैं. See, all these financial regulators, they eventually comes under Ministry of Finance. तो आपका ये जितने भी regulators हैं और आपके they are working under Ministry of Finance. ठीक है, तो इन सब के बीच में इनका एक मीटिंग्स आपकी होती है. ठीक है, which is basically a monthly meetings आपका, तो जहाँ पे they report to finance minister or they discuss the current issues in development in the market itself. ठीक है, so FSDC contribute to India's financial market by implementing by coordinating between various financial sector regulators addressing systemic risk or any other challenge which is faced by the financial system. ठीक है, so FSDC act as the inter-regulatory body to identify systemic financial risk and ensure regulatory coordination between RBI, SEBI, PFRDA and IRDA itself. ठीक है, which of the following regulatory mechanism ensure fair competition in India's banking and financial सर्विसेज? ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा आपका CCI, ठीक है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो इट इज अबाउट एंश्योर फेयर कॉम्पिटिशन इन इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, तो आपका CCI विल वर्क इन दिस केस. FBIL इज आपका दैट इज फॉर बॉन्ड एंड अदर रिलेटेड थिंग्स. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स, नो. यस, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ओवरसाइट ऑन मर्जर्स एंड एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर्स. ठीक है, so C will be right answer. Next one. What role does Insolvency and Bankruptcy Code (IBBI) play India's financial regulatory review? ठीक है, तो this is something आपका which we come up with in 2016 itself. ठीक है, तो जो आपके NPAs या others उनसे related आपका काम करता है. ठीक है, Insolvency and Bankruptcy, these two things और इनके आपके resolution आपका IBC codes are there. ठीक है, उनके थ्रू आपका solve होता है. ठीक है, so it oversees the restructuring and resolution of distressed companies under the IBC code 2016. बिल्कुल सही. ठीक है, it regulate merger and acquisition of banking. It set monetary, no. So ये आपका actually किससे related है? If any institution going through the insolvency and bankruptcy process. ठीक है, तो आपका liquidation या others इस situation में, so for that sake we have some code that is generally known as IBC, Insolvency and Bankruptcy Code itself. ठीक है, so the IBBI is responsible for implementing IBC's Insolvency and Bankruptcy Code, which provide a structured mechanism for resolving distressed companies and financial institution. ठीक है, so this is it. तो guys ये हमारा काफी बड़ा and detailed discussion about
द रोल ऑफ रेगुलेटर्स इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, सो आज के लिए तो आप इतना ही करेंगे। नाउ आई विल सी यू टुमारो। कल हम लोग फिर से आपका डिस्कशन करेंगे एक और नए टॉपिक के ऊपर। ऑलराइट, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन गाइस। थैंक यू।